Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Brokers and Analysts Conference of Accretion Pharmaceuticals Limited (APL) to discuss the upcoming SME IPO on NSE Emerge. Let us begin with the introduction of the management team. We have with us today Mr. Harshad Rathod, Promoter, Executive Director and CFO, CA Mr. Jitendra Daswani, and CA Mr. Prashant Maheshwari. Java Capital Services Private Limited are the book running lead manager to the issue, and Mr. Anup Gupta, Head of Merchant Banking at Java Capital Services Private Limited, is also present on the call with us. At this moment, all participants are in the listen only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, you may click on the Q&A tab to ask a live question. Please note that this conference is being recorded. Founded in 2012 and headquartered in Ahmedabad, Accretion Pharmaceuticals Limited is engaged in the business of manufacturing and marketing of tablets in various dosage, capsules in various dosage, oral liquid, external preparations, ointment, cream, gel, lotion, medicated shampoo, mouthwash, dusting powder, and oral powder, sachet, dry syrup, etc. either for direct sales, loan license, and or contract manufacturing. The company carries its operations from its manufacturing facility located at Ahmedabad, Gujarat, and is categorized as a pharmaceutical contract development and manufacturing organization, CDMO, offering a comprehensive range of pharmaceutical products and services. The company also holds World Health Organization Good Manufacturing Practice and ISO certifications. Additionally, the company has also received Indian Achievers Award for Emerging Company in recognition of outstanding professional achievements and contribution in nation building in 2020. The company recently received Mahasamman 2025 award for excellence in pharmaceutical sector from the Chief Minister of Gujarat. Accretion Pharmaceuticals Limited is now looking to raising funds through the IPO route for capital expenditure towards purchase of new equipment, machineries, etc., capital expenditure towards upgradation of existing manufacturing facility, repayment or prepayment of debt, funding of working capital requirements, and utilization towards general corporate purpose. The company is offering a total of 29,46,000 equity shares as fresh issue. The price band is set between rupees 96 to rupees 101, and the anchor book opens on Tuesday, May 13, 2025. The issue opens on Wednesday, May 14, 2025, and closes on Friday, May 16, 2025. The issue would list on NSE Emerge platform, and to discuss more on it, I would now request, before I would request Mr. Harshad Rathod, I would like to play the corporate video. A company that operates by a vision of empowering healthcare. A company that takes its responsibilities to the human society and their well-being as seriously as it takes its commitment to the customer. A company that believes in growing together and always redeems on its promises. Presenting Accretion Pharmaceuticals, empowering healthcare. Accretion Pharmaceuticals is India's leading manufacturer and exporter of various pharmaceutical dosage forms. Within few years, it has become the most trusted brand in the industry, which is backed by international quality standards, laid by WHO along with state-of-the-art manufacturing facility. Accretion's manufacturing facility is located at Ahmedabad, Gujarat, which is one of the most preferable location in India for manufacturing of pharmaceutical products. Accretion Pharmaceuticals is accredited from international body such as WHO CGMP, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015,
and ISO 22000-2005 certified company. Beginning its inspiring industrial saga in 2012, today the company is marching fast towards its stated goal of becoming one of the most promising and emerging company in the sector. Today, Accretion operates a manufacturing facility sprawling across 50,000 square feet, designed and equipped with best-in-class machinery, technologies and processes, spearheaded by an expert team. Company also actively supports Make in India initiative. Accretion deals in various kinds of dosage forms such as tablets, capsules, oral liquids, external preparation, oral powder. Company offers wide range of therapeutic segments: analgesic, antihypertensive, anti-diabetics and cardiac, antibiotics, anti-ulcerants and gastrointestinals, anti-diarrheals, antifungal, anti-malarial, anti-allergics, anti-amoebics, antipyretic and cough cold, anti-HIV, corticosteroids, sedatives, gynecological products, erectile dysfunction management, vitamins and food supplements. Accretion offers facilities to their customers such as formulation and development, contract manufacturing, loan license, preparation of ACTD and CTD dossier, licensing for beta-lactam products. Accretion specialize in novel drug delivery formulations such as modified release tablets, targeted delivery tablets, bi-layered tablets, sustained release tablet and capsule, flash tablets, immediately disintegrating tablets, effervescent tablets, taste mask dosage form. Company has huge storage capacity for raw material, packaging material and finished goods with controlled temperature and humidity. Quality parameters are maintained like an industrial religion at the Accretion plant, and it is mandatory to ensure that each product that leaves the plant undergoes and passes a series of stringent quality checks, ensuring the customer the best quality every time, consistently. All raw material sourcing goes through vendor approval process to ensure right quality. Everything from raw material to manufacturing, labeling and packaging is done with highest quality standards and validated process controls. To ensure best quality, company has total 32 AHUs and installed closed-loop water distribution system. Company have in-house quality control laboratory, physico-chemical and instrumental lab, quality assurance, microbiology laboratory and stability chambers to perform the testing of raw material, in-process material as well as finished product as per good laboratory practices. Company is currently catering wide range of therapeutic products in domestic market, also exporting to non-regulated as well as semi-regulated markets. Company's future vision is to enter into regulated market with PICS and UK MHRA. Accretion Pharmaceuticals is being headed by pharma technocrats Mr. Mayur Sojitra, Mr. Vivek Patel, Mr. Harshad Rathore and Mr. Hardik Prajapati. Their collective vision is to provide quality healthcare products at competitive pricing and to constantly explore new market horizon. Accretion's success strategy is to be customer-centric in thought and action, provide world-class quality healthcare products at competitive pricing with defined delivery time, always be ready to meet the customer's emerging needs by maintaining a large inventory of preconditioned ready raw materials at all times. To sum up, Accretion Pharmaceutical believes that every quality-conscious company should join hands with it. That is the confidence a company gains when its core corporate value is customer satisfaction through superior quality. Accretion Pharmaceuticals, empowering healthcare.
Thank you. Ladies and gentlemen, I would now like to request Mr. Harshad Rathod, Promoter, Executive Director, and CFO, to give his opening remarks and an overview of the company. Thank you, and over to you, Mr. Rathod. Uh, Good evening, everyone. Myself, Harshad Rathod, uh, CFO and the promoter of the company. And I welcome you all in behalf of our Accretion family. Here I give you a basic information and some presentation regarding our equity future. Am I audible? Yes, sir, you're clearly audible. Please proceed. Okay. बेसिक मैं आपको सब मेरी कंपनी के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. We are found in 2012 basically. We have started our manufacturing firm in 2012 with uh, sorry. Hello. Sorry. Uh, in 2012 we started हमने भी पार्टनरशिप फर्म से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए स्टार्ट किया था. Initially we started with tablet, capsule and oral liquid. We got our manufacturing license in 2014. Initially we are manufacturing the tablet, oral liquid and capsules. After we expand in our manufacturing firm in 2017, we added two manufacturing line as external preparation as well as oral powder. तो हमने बेसिकली एक डोमेस्टिक मार्केट से हमने एक स्टार्ट किया हुआ था. धीरे धीरे करके 2014 से 2020 तक हम डोमेस्टिक मार्केट कैटर कर रहे थे. उसके बाद हमने पूरे मार्केट को रिसर्च करके बाद हमने 2020 में धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट मार्केट में कन्वर्ट होने के लिए 2020 में हम WHO सर्टिफिकेशन के लिए हमने प्रिपरेशन किया अप टू 2020. आफ्टर वी गॉट द WHO सर्टिफिकेट इन 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल we got certification from oral on the 5 sections. पांचों सेक्शन में हमने टेबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ओरल पाउडर, 5 सेक्शन में हमको WHO सर्टिफिकेट मिला. उसके बाद हमने डोमेस्टिक मार्केट में धीरे धीरे होके एक्सपोर्ट मार्केट की कैटर करने के लिए हमने वो मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. और हमने वो जो सेगमेंट था हमारा था वो 3 बिजनेस वर्टिकल में हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ था. डोमेस्टिक मार्केट, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल टू द दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो 3 सेगमेंट में हमारा पूरा वर्टिकल यानी बिजनेस जो हमारा रेवेन्यू है वो 3 सेगमेंट में पूरा वर्टिकल डिवाइड हुआ है. उसमें हमारे पास WHO GMP, GLP एंड ISO सर्टिफाइड हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी. उसमें बेसिकली हमारे 5 सेक्शन है: टेबलेट, कैप्सूल, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ओरल पाउडर एंड ओरल लिक्विड्स. तो उसमें अलग अलग थेरापेटिक सेगमेंट में हम प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं. मोर देन 1200 प्रोडक्ट्स हम कैटर कर रहे हैं अभी. उसमें मेजरली एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, कार्डियक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अल्सर और बाकी पूरा सेगमेंट है जिसमें हम पूरा डिफरेंट एंटीसेप्टिक यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम अभी कैटर कर रहे हैं. हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अभी प्लान किया हुआ है उसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से यूटिलाइजेशन और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा. उसमें इंस्टॉल कैपेसिटी यानी टैबलेट में है तो 65 करोड़ टैबलेट्स है. वैसे ही और ओरल लिक्विड, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, कैप्सूल सेक्शन और ओरल पाउडर उसमें पूरा डिवाइड हुआ है. और उसके साथ इंस्टॉल कैपेसिटीज के साथ यूटिलाइजेशन भी उसमें मेंशन किया हुआ है. और सब में हमारा जो रेवेन्यू है उसमें मेजर जो हमारा रेवेन्यू पार्ट है वो टैबलेट से आता है. वो 35.16% जो हमारा रेवेन्यू वो टैबलेट से आ रहा है. ओरल लिक्विड, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, कैप्सूल, ओरल पाउडर वैसे 20.1%, 17.3, 15.65 अप टू डेट वो हमारा बाइफर्केशन है रेवेन्यू का. और हमारा जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है वो हमारा अभी 3.8 करोड़ का है.
हमारा जो बाइफरकेशन उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो 22 करोड़ 95 लैक्स का है, और डोमेस्टिक मार्केट है वो 963 करोड़ का, और 963 लैक्स का हमारा वो रेवेन्यू का पार्ट है उसमें। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो दिया हुआ है। कैप्सूल जैसे भी हम रॉ मटेरियल पहले प्रोक्योर करते हैं, तो उसके एक बेसिक जो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो है, जो कोई भी प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो उसके लिए जो उसके पहले परचेस ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद उसके रॉ मटेरियल के लिए उसका प्रोक्योरमेंट वेंडर क्वालिफिकेशन होता है। वेंडर क्वालिफिकेशन के बाद जो भी वेंडर रहता है उससे हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, यानी रॉ मटेरियल वहाँ से मंगवाते हैं। रॉ मटेरियल मंगाने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्लानिंग करके उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं अभी। तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है वो कैप्सूल इलेक्ट्रॉन सिरप का यहाँ पे दिया हुआ है, यानी टैबलेट कैप्सूल सिरप सबका पूरा पूरा अलग से जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए फ्लो, और उसके लिए पूरा वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसका डिज़ाइन हो रहा है अभी। ये टैबलेट और ये ओरल पाउडर, ये अभी बेसिक देखने जाएंगे तो 2012 में हमने कंपनी का एक फॉर्मेशन किया था। जो कंपनी 2012 में हमने एक एज अ पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से 4 प्रमोटर ने हमने स्टार्ट किया था, जो हम 4 कॉलेज के एक बैचमेट्स है। कॉलेज में हम साथ में थे बैचलर ऑफ फार्मेसी में। उसके बाद हमने सबने अलग अलग जगह से तीन प्रमोटर ने एमबीए किया हुआ था और एक प्रमोटर ने एमफार्म किया हुआ है, और साथ में फिर मिलकर 2012 में प्लान किया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 2 साल 1.5 साल जो हमारा था वो एग्जीक्यूशन में बना। हमारा जो टैबलेट यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उसको बनाने में 1.5 साल लगा, और फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हमको 2014 में मिला। उसके बाद अप टू 2020 हम डोमेस्टिक मार्केट कैटर कर रहे थे। उसके बाद 2020 में हमने WHO कंपनी कन्वर्ट किया, और पूरा हमारा जो हमारा फोकस था वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेके फिर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट के लिए हम करने गए। और 2020 के बाद 2000 अप टू 22-23 तक हमने वो सब प्रोडक्ट्स डेवलप किए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सब काम उसमें किया। और आफ्टर 2023 में हमारी जो कंपनी थे वो फिर से WHO में हमारा सर्टिफिकेशन रिन्यू हुआ। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन, और 2023 नवंबर में वो हमारी कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद मार्च 2025 में लिस्टिंग के लिए हमको अप्रूवल मिला NSE इमर्ज में। ये हमारी 4 प्रमोटर है हमारे, उसमें विवेक पटेल जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने एक MBA किया हुआ है DY पाटिल इंस्टीट्यूट से बेसिक। वो हमारे साथ B.Pharm में चारों ने B.Pharm किया हुआ है LJ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद से। उसके बाद विवेक पटेल ने MBA किया हुआ है DY पाटिल MBA मार्केटिंग में किया है, फार्मा MBA। वो जो अभी कंपनी में वो प्रोक्योरमेंट और साथ में डोमेस्टिक मार्केट है वो देख रहे हैं। अर्शद राठौड़ यानी मैंने MBA किया हुआ है ये फाइनेंस में, और मैं CFO यानी जो फाइनेंस है वो देखता हूँ, और बाकी थोड़ा अदर एक्सपोर्ट जो यानी डेवलपमेंट है वो मैं देखता हूँ। हार्दिक प्रजापति उन्होंने B.Pharm और M.Pharm सोटिक्स में किया हुआ है, वो कोर प्रोडक्शन है, वो हार्दिक प्रजापति देखते हैं। और मयूर सुजीत उसमें B.Pharm के बाद उन्होंने लंदन से MBA किया हुआ है फार्मा इंटरनेशनल बिजनेस में, यानी जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो पूरा कैटर वो मयूर सुजित्रा करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो जो अलग अलग कैटर करती है, उसमें एक प्लान स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव है वो डिफरेंट गेट पे पड़ा हुआ है, यानी वो स्टेज पे हम काम करते हैं। तो जो हमारा जो कोर हमारी है वो क्वालिटी बेसिस पे काम करते हैं, जो क्वालिटी कमिटमेंट और डिलीवरी उसके बेस पर हम काम करते हैं। अभी जो हमारी कंपनी है वो 25 प्लस कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है। उसमें जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है हमारा वो कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, श्रीलंका और कुरोकाओ में है। और जो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू हम सेल करते हैं। उसमें मोर देन 25 कंट्रीज है अभी, कॉन्गो, लीबिया, अंगोला, बोत्सवाना, वेनेजुला, कंबोडिया, और साथ में एशियन कंट्रीज भी है। उसमें श्रीलंका है, म्यांमार है,
तो डिफरेंट कंट्रीज है जो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, और उसका बाइफर्केशन जो रहता है उसके लिए 1200 प्रोडक्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी एफडीए से वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इंडियन एफडीए से, वो एक्सपोर्ट के लिए वो रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। तो वो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर को देते हैं, और वो मर्चेंट एक्सपोर्टर उसके हिसाब से वो पूरा प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ में डोमेस्टिक थोड़ा मार्केट है वो भी कैटर कर रहे हैं अभी। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारी है, बेसिक है, ओवरव्यू आपने फोटो वीडियो में तो देखा ही होगा। और साथ साथ में ये ग्रेनुलेशन एरिया, लिक्विड फिलिंग्स एरिया, टैबलेटिंग मशीन, क्यूसी लैब, माइक्रो लैब, ये हमारा एक बेसिक फ्लो दिया हुआ है जो मटेरियल सोर्सिंग के लिए स्ट्रेटजी होती है। कोई भी परचेस ऑर्डर हम जब भी रिसीव करते हैं, तो जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो जब भी कहीं पे पिच करती है या कहीं से ऑर्डर लेती है, उसके बाद जो भी मटेरियल होता है वो प्रोडक्ट होने लेने पे हम उसके प्रोडक्ट का एक बाइफर्केशन होता है। वो बाइफर्केशन हिसाब से एक प्रोडक्शन प्लानिंग में लेते हुए कि रॉ मटेरियल जब भी परचेस करना हो तो उसके लिए पहला वेंडर क्वालिफिकेशन होता है। वो के वेंडर क्वालिफिकेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। उसके बाद जो भी वेंडर क्वालिफाइड होता है उसके पास से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। उसके बाद उसके पैकिंग सेम प्रोसेस होता है, वो पैकिंग मटेरियल में होता है। वेंडर आफ्टर वेंडर क्वालिफिकेशन पैकिंग मटेरियल वो हम रिसीव करते हैं, और वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो फॉलो करके जब भी वो माइक्रो लैब और क्यूसी लैब उसमें जब भी वो क्लियरेंस आता है, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए सेल करते हैं, यानी रेवेन्यू में वो कन्वर्ट होता है। ये इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डे टू डे, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री डे टू डे बढ़ती जा रही है ऑलरेडी। जैसे अपनी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इंडिया जैसे अभी फेमस है, क्योंकि इंडियन जो भी मार्केटिंग है हमारे कंट्री है उसमें जेनरिक प्रोडक्ट्स के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा थर्ड आई थिंक प्रोडक्शन हाउस है, जो हम इंडिया थर्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री। और 16.5 CAGR से प्रोडक्ट हमारा हमारी टोटल इंडस्ट्री बढ़ रही है अभी के टाइम पे। और बाकी जो भी है, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में है, और गुजरात है जो वो ऑल ओवर इंडिया का जो 42% एक्सपोर्ट हो रहा है वो गुजरात से हो रहा है अभी। क्यों बाकी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो 35% जैसा जो ऑल ओवर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी गुजरात से हो रहा है, और एक्सपोर्ट 42% के आसपास हो रहा है टोटली। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल जो अभी है उसका बाइफर्केशन है, तो जो ग्रोथ वाइज है ये स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएटर जो हम हमारी जैसी पीयर कंपनीज है जो हम कर रहे हैं, तो उसमें साकार हेल्थ केयर है। तो साकार हेल्थ केयर का जो पर्टिकुलर है वो ऑन्कोलॉजी और जेनरिक प्रोडक्ट्स में है और इंजेक्शन में है। उसके हिसाब से हमारे पास अभी जो है वो पाँच प्रोडक्ट्स है, और जो वाइड रेंज है हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें हम अभी कैटर कर रहे हैं। बाकी की कंट्री के हिसाब से बाकी की जो कंपनी है उसमें जो बाइफर्केशन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं अभी। जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो उसमें बेसिकली हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हमारे पार्टनर्स है, यानी हम जो 4 प्रमोटर है वो बेसिकली वो आ रहे एक फार्मा बैकग्राउंड से, क्योंकि हमने एजुकेशन फार्मा बैकग्राउंड से लिया हुआ है। उसके बाद हमने पूरे अलग से हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो अलग से MBA और फार्मास्यूटिकल M.Pharm किया हुआ है, और हमारा 13 साल का हमारा पर्टिकुलर हमारा सबका एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस और वही एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने एक जो हमारा डिज़ाइन है वो सब हमने फाउंडेशन जो है हमारा उसने हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो वही डिज़ाइन से हमारा जो यूनिट है वो WHO GMP सर्टिफाइड GLP यानी जो स्टेट ऑफ आर्ट जो फैसिलिटी है, और बाकी भी जो कंट्रीज़ है उसके लिए आज अभी के जो कंट्रीज़ है उसके जो नॉर्म्स है वो हम सब फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए फुट प्रिंट हमारी जो है वो वाइड रेंज में हम एक्सपांड कर सकते हैं। ये थोड़ा की रिस्क है। ये फाइनेंशियल जो डे टू यानी ईयर टू ईयर ऑन ईयर
हमारा जो फाइनेंशियल है वो हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक फाइनेंस में बेसिक हम देखने जा रहे हैं तो 2020 तक हम डोमेस्टिक मार्केट कैटर कर रहे थे। आफ्टर 2020 हमने अप टू 22-23 तक हमने जो हमारी जो प्रोडक्ट्स थे वो उसके डॉक्यूमेंटेशन और उसके रजिस्ट्रेशन में हमारा टाइम निकला। उसके बाद जो भी कंट्रीज़ में हमने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था वो डायरेक्टली और मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू वही प्रोडक्ट अब जाके जनरली इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years, तो वो रजिस्ट्रेशन होने में 2 to 3 years हो रहे हैं। तो वो जब भी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो गए और उसके बाद जो भी अभी ऑर्डर्स और जब भी जो प्रोडक्ट होने के बाद बाकी रेवेन्यू है वो अभी धीरे धीरे करके उसमें बढ़ रहा है। और एज फार्मास्यूटिकल वो एज अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है, तो उसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन या कम रजिस्ट्रेशन में वो प्रोडक्ट नहीं जाता है। तो उसके लिए जो भी हमको नॉर्म्स है वो सब फॉलो करने होते हैं, वो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। फिर भी जो प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं और इन फ्यूचर के लिए भी ऑल प्रोडक्ट चल रहा है। तो अप टू 24 हमने 36.34 करोड़ के टेंटेडली हमारा रेवेन्यू था। और अप टू 31 दिसंबर 2024 35 करोड़ 66 लैक्स का हमारा रेवेन्यू था। ये बैलेंस शीट। एज फार्मा एज अ फार्मा इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है जैसे, और उसके हिसाब से और जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से मार्जिन भी रहता है। और हमारा इबिटा लेवल डे टू डे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो भी अभी कैटर कर रहे हैं वो एक मोनोपोली बिजनेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन वन टाइप ऑफ मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि जो जिसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है। मर्चेंट एक्सपोर्टर के खुद के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता है। उनके वो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट रहता है इंडिया में हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसके हिसाब से एडिशनल थोड़ा बेनिफिट हमको मिल रहा है, और पैट हमारा उसके हिसाब से इबिटा और इबिटा मार्जिन डे टू डे हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो उसके लिए पूरा ग्राफ है। अप टू 31 मार्च टू हमारा इबिटा लेवल 23.06 था, और अप टू December 31 2024 24.7 हमारा इबिटा है। और प्रॉफिट लेवल यानी पैट लेवल भी वैसे ही अप टू 11.51 से लेके अभी 14.68% हमारा पैट डे टू डे बढ़ रहा है। आईपीओ अपॉर्चुनिटीज़, आईपीओ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट के लिए हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम रेवेन्यू यानी जो हम फंड रेज कर रहे हैं अभी, उसके लिए पूरा बाइफरकेशन हमने ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो उस फंड से हम नए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं मशीनरी। उसमें बेसिक जो प्रोक्योरमेंट है वो थोड़ी नई मशीनरी ले रहे हैं, थोड़ा जो हमारा एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा हमारा पेमेंट जो कंपनी का बोरोविंग है, रीपेमेंट है, वो 99 लैक्स का रीपेमेंट कर रहे हैं, और बाकी वर्किंग कैपिटल है। और जो अभी हम कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोर देन 30 कंट्रीज है, और बाकी नियर फ्यूचर में अभी और भी कंट्री बढ़ने वाली है। जो कंट्री जो कैटर करने के लिए WHO जो यूनिट यानी WHO जो नॉर्म्स है, और एक वर्ल्ड वाइड में जो कंपटीशन है उसके हिसाब से कैटर करने के लिए हम हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है जो 2014 से वर्किंग है उसको हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, वो जो है वो कर रहे हैं, और साथ में कैपिटल थोड़ा एक्सपेंडेड यानी नया मशीनरी भी ले रहे हैं, जिससे हमारा कैपेसिटी बढ़ेगा और हमारा रेवेन्यू भी उससे हमारा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। Jessica, is up to you, please. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. To ask a question, please click on the Q&A tab on the panel and click on raise hand button. The operator will announce your name when it is your turn to ask a question. You may also type in your text questions. Please accept the prompt on your screen and unmute your microphone while proceeding with your question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles.
To ask a question, please click on the Q&A tab on the panel and click on Raise Hand button. You may also type in your text questions. The first question is from the line of Neil Doshi from Fortune Family Office. Please go ahead. Hello, sir, am I audible? Yes. Yes, you are completely. Yeah, so my question is about FY25. How are we doing this financial year? In FY25, we will FY25-26 you are asking about, right? Yeah, Yeah. So in this particular financial year, with the help of IPO funds which we are raising and all the products which already registered for the export, we will reach about 75 to 80 crore turnover in this particular 25-26 year. okay. And I have a And slightly we are broader expecting question to also. add 3 to 5 Sorry. more countries during this year only. And by the 26, we are planning to reach our presence in worldwide around 50 countries. Okay, and I have a slightly broader question as well. Why do you think we have such good margins as compared to the competition? You've mentioned Yes, it, of but course. could you add just a We little bit more Yes, color yes, to it, of course, please? of course, of course. We do have such a good margins because of our change of line of activity. Like before we were just doing a domestic market, and then after we enter into export market, whenever we are entering into export market, the products which we have already registered in those countries, we do have a very good gross margins. Such like in domestic market, which we were having 10, 15 or 20% JP ratio gross margins. In export, we are having a 35 to 40% in merchant export, and whenever it is a direct export and with a brand name of us only, it's around 50 to 55% gross margins. It is of course variable with the products, different products as well. In some products we are getting a 60 to 70% GP margin also, but it depends upon the product. I'm asking about the average product margin, which is around of 35-40% in merchant export, and in direct export it will be around 55%. So that is why Okay. good GP will cater good profit and good net profit, and good net profit will ultimate its good net pet. Okay, and your view on US FDA approvals, GMP, EU GMP? Of course, we are thinking about that. We will into US FDA approval in the near future. But before that, we want to expert ourselves in those particular countries, around 50 countries, which already targeted as of now. First, we will reach in those countries. Then we will think about the US and Europe market. Okay, understood. Thank you so much. I'll let others ask the questions first. Thank you. Thank you. Thank you. Participants, to ask a question, you may click on the Q&A tab on the panel and click on Raise Hand button. You may also type in your text questions. The next text question is from Ujjwal Kumbhare, an individual investor, and the question is, what is the top line growth do you expect in next 2 to 3 years? Uh, Of course, in 25-26, we are expecting 75 to 80 crore top line. Then after, we are expecting 95 to 100 crore turnover by 27, and by 28, it may be more than 115, 120. Depends upon the how 2 years of this we will grow, and our new countries are entered into that. It may be more than that, but we are expecting at least 124 last by 28. Thank you, sir.
Please click on the Q&A tab on the panel and click on raise hand button to ask a question at this time. We have a next text question from Mahinder Soni from Mhm. Equity World, and the question is, what are the key cost components driving EBITDA, and how is APL managing raw material or operational costs? Uh, Arshad sir, if you want like so, regarding material and how we are managing operational cost. Key cost raw material and okay. Uh, जो रॉ मटेरियल है, हेलो, यानी व्हाट इज द Yes, sir, you're की audible. की Please proceed. यस की कॉस्ट, यानी जो प्रोडक्ट्स रहती है उसका की कॉस्ट, जो बेसिकली जो की कॉस्ट है वो एपीआई का होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड द ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द इंडिया, and your raw material and operational cost. Operational cost, we are into the manufacturing hub of Gujarat actually in Ahmedabad. So operational cost maybe because we find easily very workflows, जो भी हमारा वर्कफोर्स है वो इजीली अवेलेबल रहता है, और गुजरात है वो ऑलरेडी मैंने बताया उसके हिसाब से 35% जो ऑल ओवर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी इजीली अवेलेबल ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज all the that workforce, and बाकी इलेक्ट्रिसिटी और पावर और जो भी है वो सब इजीली अवेलेबल है एज गुजरात में बैठा है इसलिए. And for briefing in regarding key components of EBITDA, I would like to tell you that in EBITDA, two things are main in particular are products. There is a one raw material and second one is a packing material. Okay, so RM and PM we are talking in that in a language like a pharma. RM PM what we are doing, it is the main thing and main cost will incur about this only. Otherwise, we do have a fixed cost of our labors and workers and salaries. So it will be variable for a consumption of raw material only. Thank you, sir, for answering that question. We have a next audio question from Disha Shah, an individual investor. Please proceed. How does it? Disha, I have unmuted your line. Please proceed with the question. Hi, Yes, hi. I would like to understand how does APL's margin profile compare with listed peers in the CDMO or pharma manufacturing space? Uh, in that, madam, you have to compare with company to company how much products they are catering and which type of countries they are exporting for a particular CDMO if we are talking about. And if a CDMO country, pharma, it does not simply means that they are in export market only. They may be in domestic market also. As like our peer competitive company, which is a Sotec Pharma, it is in purely domestic. It is also a CDMO company, but it will be in a domestic market only. So it thoroughly depends upon the how which countries you are catering and which type of products you are catering, and how much sections you have. And Okay. also registration, how many registration you have in which country as well as which product. Okay, and I have one more question. Yes, please, ma'am. So, what is APL's EBITDA margin for FY24 and 9 month of In FY25? Is there any yes, improving trend or yes, of course, madam. In 24, our margin, EBITDA margin was 23.06 precisely, and in 9 month financials, it is a 24.74. We are expecting it by 25% by the 12 month of financials. I mean to say 25, 26, 24, 25 ending financials by March 25. We are expecting 25%, and of course, it will be improved by little by percentage whenever we are getting new products and our direct export. When we get more direct export, then the EBITDA margin will move. okay? And I have one more last question. Of course, madam.
How scalable is APL current infrastructure to meet growing demand? Madam, for infrastructure, we would like to address you that we do have a 50,000 square feet manufacturing facility as of now, and we do have a good manufacturing capacity as of now as well. And after raising funds, once we will get sufficient turnover, we do have a land space nearby areas which where we can expand our manufacturing facility as well. So we will go with that plan in near future. Okay. Yeah, that's it. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. A reminder to all the participants that you may please click on the Q&A tab on the panel and click on raise hand button to ask a question. You may also type in your text questions. We'll take the next question from Neil Doshi from Fortune Family Office. Please go ahead. So Yes, please. how much do the top five customers account for your revenue FY25? Top five need revenue cut लिया sir. 15 to 20%. Top five customers will get 20%, around 20% revenue in total revenue part. Okay, and how many customers in FY25 are repeat orders? All are repeated, right? All Because customers are all repeated. mostly 80 to 80%, 85% customers are repeated because their product are registered with us and they are merchant exporter. That's why our all the mostly customers are repeated from last 3 years mostly. Then sir, I would like to brief you more that ये फार्मा कंपनी जो होती है सर, इसमें एक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट रजिस्टर करने पड़ते हैं. वही प्रोडक्ट आप उस पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्टर होने के बाद बेच सकते हो. तो अगर एक बार एक कोई प्रोडक्ट रजिस्टर हो गई हो तो 5-10 साल के ऊपर तक के लिए वो अवेलेबल रहती है. एंड वो उसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ही कर लेनी पड़ती है सामने वालों को जहाँ से वो अप्रूव्ड है. तो बेसिकली अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट अगर हमको अप्रूवल मिल गया तो वो 10 साल तक वो प्रोडक्ट चलेगी मार्केट में. तो इसीलिए हमारे पास जनरली रिपीटेटिव ऑर्डर्स उनके तो आएंगे ही. एंड जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए नए प्रोडक्ट्स के होंगे वो अलग है, लेकिन वो रिपीटेटिव तो रहेगा ही. क्योंकि एक ट्रेंड चल गया, सपोज कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कोई दवाई चल रही है तो वो उसी मैन्युफैक्चरर से लेनी पड़ती है आपको. एंड क्योंकि वो वहाँ के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है इसीलिए. तो ये फार्मा में एक ट्रेंड होता है सर. समझ गया, समझ गया. और आपको ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो मल्टी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं? सारे मतलब हमारे सारे 45 जो भी हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे ही हाँ. ऑर्डर्स देते हैं. क्योंकि उनके लिए भी हमारी फैसिलिटी ही बेटर रहती है. क्योंकि उनका रीजन है कि उनको सारी एक प्रोडक्ट दूसरी जगह से करेंगे, दूसरी अलग से करेंगे तो उनको भी तकलीफ. तो जनरली क्या रहता है, कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्टर रहता है तो उसको कंटेनर लोड करना होता है कि एक प्रोडक्ट के लिए वो पूरा कंटेनर होगा, वो बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है दैट अभी के टाइम पे. तो उसके लिए उसको अलग अलग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट का सेगमेंट्स चाहिए. तो जो प्रोडक्ट है तो उसमें जैसे कोई टेबलेट्स है तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, और शायद सिरप्स है तो उसमें उतना रेवेन्यू नहीं होता है, उतना उतना सेल्स नहीं होता, लेकिन वो कंटेनर लोड हो जाता है, उसका बढ़ जाता है वॉल्यूम यानी. तो वो उसके हिसाब से वो पूरा डिजाइनर होता है, 40 फीट कंटेनर रहता है, वो पूरा उसके हिसाब से डिजाइन होता है कि एक ही जगह पे पांचों पांच सेक्शन या 2 या 3 सेक्शन में उसका कंटेनर लोड हो जाए. तो उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेके बाकी के जो एक्सपोर्ट के जो कंप्लाइंस है उसके लिए उसको दिक्कत नहीं हो. तो वो ऐसे ही जनरली मर्चेंट एक्सपोर्टर जो रहते हैं वो प्रीफर करते हैं कि एक ही जगह से सब प्रोक्योर कर पाए वो. ओके, ग्रेट. और फिर आगे जाके हाउ डू यू सी इवॉल्विंग? डू यू सी मोर टुवर्ड्स अ CRAMS मॉडल और डू यू वांट टू स्टे अ फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चरर? रिसेंटली तो हम फॉर्मुलेशन में ही हम फोकस कर रहे हैं, और उसके लिए अभी जो हमारा जो प्रोडक्ट यानी रेवेन्यू हमारा मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा अभी हमारा मर्चेंट एक्सपोर्टर का सेल है एज कम्पेयर टू हमारा. तो वो अभी धीरे धीरे हमारा जो फोकस रहता है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर तो है ही, और साथ साथ में खुद का भी एक्सपोर्ट, डायरेक्टली एक्सपोर्ट, जिसमें हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, हमारा पैट ज़्यादा है. तो वो हम फोकस कर रहे हैं कि एक साथ में वो बढ़ेगा, वो एक सर्टन लेवल पे आ जाएगा,
उसके बाद और साथ-साथ में जो भी ये अभी हम एक्सपांड कर रहे हैं, उसमें भी हमारा रेवेन्यू मॉडल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और साथ-साथ में हम हमारा यानी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगा। तो वो एक बार कैटर कर लें, उसके बाद देखते हैं फिर कैसे धीरे-धीरे करके आगे हम कैटर करेंगे। लेकिन एज़ ऑफ नाउ हमारा जो भी एक्सपर्टीज़ है, वो फॉर्मुलेशन में है और वो हम फॉर्मुलेशन में ही कैटर करेंगे। Okay, thank you so much. You've been very थैंक यू। generous. Thank you so much. Thank you. We'll take the next question from Ujjwal Kumbhare, an individual investor, and the question is: for exporting, what challenges do we face, and what is the bottom line margin domestically and abroad? आप भी मतलब एक्सपोर्ट के लिए कुछ चैलेंज रजिस्ट्रेशन जो भी अभी एक्सपोर्ट के लिए चैलेंज यानी कंट्री कंट्री के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस थोड़े छोटे मोटे रहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हम कर रहे हैं वो पहले हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसके लिए डोजियर लगता है, वो एक बार डोजियर प्रिपेयर होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद हम कोई भी जो हमारा मर्चेंट एक्सपोर्टर रहता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट रेडी है, तो उसको सीधा वो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए XYZ जो भी कंट्री है उनका जो भी वो कैटर कर रहे हैं उसके लिए वो सीधा दे सके। उसके लिए जो भी है अभी एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग चैलेंजेस, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट वो मर्चेंट एक्सपोर्ट करता है अभी बेसिकली, तो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और डेवलप करने के लिए फिर बाद उसको प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। और जो कई सारी रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट है उसके लिए जो डोमेस्टिक मार्केट में देखते हैं तो 15 to 20% जैसा मार्जिन रहता है, और एक्सपोर्ट जो है उसमें डिपेंड्स है, ऑन एन एवरेज देखने से 35 to 40% हमारा जीपी मार्जिन रहता है। Thank you very much, sir. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Mr. Anup Gupta, Head of Merchant Banking at Java Capital Services Private Limited, for closing comments. Thank you, and over to you, sir. Hi everyone, and I believe that Mr. Harshad Bhai has explained all the details about to the company and product, their strategy, business, and what the margins level in the export market. And I have seen the journey of IPO journey while filing the DRHP. I find that the company is good and they have a potential, they have a legacy of the to build a big company. Also, they have an expertise, knowledge about to the manufacturing, as well as they have a good market strategy also. They participate in the various exhibitions, they gain the certifications, they gain the customers, new customers. So all while passing this journey of the IPO, I find the promoters, all the promoters are very expert as well as gaining the business. So as a part of my part of the due diligence, I find the company is a good bet for the capital market, and they will gain the more business in the export market because they are in the formulation section right now. But definitely down the line, when they will establish well, they will come up with a big way, and they may establish the brand also. So I find this the investment opportunity good opportunity, and as a peers review, if I say that it is parallel, it's a market, it's a better pricing compared to the industry norms. So it's a good opportunity to make the investment in pharma company, and it will be a good investment for the investors. Thank you very much to all. And if any Thank you। questions to the merchant banker, we welcome here on the behalf of Java Capital. We do all the best to Mr. Harshad Bhai and all the promoters, and we hope that we will gain the all the IPO success very soon. Thank you so much। थैंक यू Thank you। Thank you very much, sir. Thank you, members of the management. Ladies and gentlemen, on behalf of Accretion Pharmaceuticals Limited, that concludes today's session. Thank you for your participation. You may now click on the exit meeting to disconnect. Thank you so much, sir. Have a great day. Thank you यू everyone. थैंक यू थैंक यू